Unacademy. How to face an interview, what all aspects have to be covered. Today, I'll try not to cover law topics because as it is, there's so much to cover in other parts. So that is the reason why. Let us see how much we can cover today. Now, when we start our interview, always remember you have about 25 to 30 minutes to market yourself. Interview is basically a personality test. It's called a personality test. In 30 minutes, you have to market yourself. You have to package yourself. And that is the reason why you have to be your best. Please remember, it is not a test of your knowledge. Your knowledge has already been tested in your prelims and in your mains. So this is a test of your personality. And that is why जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ ना, I want to make you think like a judge. I treat you like a judge because then your personality slowly undergoes a change. First, when you appear before any person, the most important is your dress. So first, let's start with the dress code. Now, as far as boys are concerned, you should be wearing a suit. When I say a suit, it should be a dark colored suit. Please refrain from wearing light suits. It's always never a black suit, because when you wear a black suit, you appear as an advocate. So you can wear dark browns. Navy blue is a very safe color, but not multicolored. Try to have a single color suit. That's rule number one. So all boys will, because your interviews are coming right away, you can wear a suit, a light woolen suit or a light suit. So first thing, you all have to wear suits which should be blue. Blue means dark navy blue. Navy blue, blue black, brown, dark brown, chocolate brown. But I don't want you to wear light because it's very difficult to match ties, etc. A. B. With this, if you're wearing a brown suit, you should be having a dark brown shoes. You should not be wearing a black shoe with a brown suit. So wear a dark. So if you have a dark chocolate, please do not wear shoes which are like police shoes, jaise hum pehante hain. Not those browns. I want you to buy deep chocolate brown shoes with chocolate if you're wearing a brown suit. And if you're wearing a blue, dark blue, or navy blue, or any of these, or a gray suit, then your shoes have to be black. Now, always remember, you should be wearing Oxford shoes. Buy Oxford shoes. Nobody should be wearing a pump shoe. And always remember, your socks should either be brown if you're wearing a brown suit, or they should be black, preferably without any blue and various designs. So black socks, black Oxford shoes, and of course your blue, dark blue, blue black, or dark brown, or gray, dark gray. These are the colors which I will always advise you to wear. As far as girls are concerned, I always prefer that you wear simple salwar kameez with a proper dupatta. Those who are very comfortable with saris, you can wear saris, but then at a big risk. If you're wearing it for the first time or you're not very comfortable in wearing saris, please don't try to wear it for the first time. It can be very counterproductive. Pata chala sari interview mein aap sari sambhal rahe ho. So always, because normally you're not used to wearing saris so often, that is why I always prefer that my girl students should be wearing a simple suit. Now, when I say a simple suit, you should not be wearing very loud colors. I want you to wear pastel colors, depending on your complexion. If you are fair, well, you can go for light pastel colors. You can go for pinks. You can go for light greens. Depends. But I don't want you to wear multicolors. And I don't want you to wear white suits. No, because then again, it gives a very dull appearance. So you wear pastel colored suits with a matching dupatta. Please remember, the golden principle is my
I should not be noticing your clothes. You should be gelling so well that मेरा ध्यान आपकी clothes की तरफ नहीं जाना चाहिए. That is a basic principle of clothes. As far as girls are concerned, unless you are married, I don't want you to be wearing any rings. I don't want you to be wearing anything except a simple, not a flashy watch, a simple जो एक leather strap वाली watch होती है छोटी सी, वो पहन के जानी है. Remember always, simplicity is the best virtue of a judge. I don't want you to be flashy. And similarly for boys, I don't want you to be wearing very flashy gold watches. A simple strap wali, simple si ghadi is always preferable. If anybody has tattoos, I will advise them कि वो उसको छुपा लो. अगर बाजू वगैरह पे है तो, because it unnecessarily raises questions, so try to avoid such tattoos, try to hide them. Third thing, if now whether women should be wearing lipsticks and nail polishes. Well, nail polishes can be allowed, but then they should be very, very simple, not that red, that what we call cherry red. No. A simple white or a simple, very, very innocuous nail polish and a very simple lipstick. A very simple lipstick means maybe what we call a lip humidifier, something like this, which will always be absolutely innocuous. I don't want anybody to be standing out that with a dark lipstick or danglers, earrings, very small earrings which are on the ear. I don't want you to wear any danglers. Also, your hair should be tied. I don't want you to go with open hair. Unless, of course, you're short-haired, then it's a different issue. But otherwise, I want a neatly made up, your hair should be very neatly done. Boys should be having a close shave on that very day. And you should not be having long hair. You should be having short, graceful hair. So this is your external appearance. Now, one thing more. Normally what happens is just before our interview, we have a lot of puja. Our parents go for it. And then, they'll make you wear that red vermilion, wo kya hota hai, molly pehnate hain. Now, please remember, try to not to, agar pehni hai molly, to fir chupa lena. Kyunki, sometimes because I'm talking out of experience. Once one of my students, he went and he was wearing a huge molly, 5-7 itna mota. First question they asked, wo baitha bhi nahi. Beta, oh, so you are very religious. Do you think God is going to help you today? The whole interview started on a very negative note. So this is the reason, one, if you, sometimes, we are religious. We feel, nahi, mujhe confidence aata hai molly se, fine. But then put it below the sleeve. Sleeve ko upar kar lo, usko chupa lo. You don't have, and please don't wear, ek to hoti simple molly. एक होती इतनी चौड़ी बार बार पूरे आधी बाजू कवर कर ली मौली से. No, please, because you're going to invoke definite questions on this. Now, as I said, so this was a dress code which you must follow. You have, as I said, 25 to 30 minutes to market yourself before you enter the room. Now, please remember, the first 15 seconds or 30 seconds will determine about 25% of your interview. Before you enter the room, take a lot of deep breaths. We are very scared. We are very, I will not even say scared, we are very tense. And that is a time when less oxygen goes into our brain. And that is why we lose the sense of time, even the sense of belongingness. We are as if we are in a euphoria. That is a time when you have to be totally in control of yourself. Us time pe, don't have this attitude कि अगर मैं ना select हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? अगली साल फिर appear हो जाओगे. 100 और आ रहे exams, कहीं भी pass हो जाओगे. So, go with a do or die attitude कि ठीक है, देखा जाएगा. जब आप ये दिमाग में रखते हो कि अगर ना हुआ मैं तो मर जाऊंगा, no. Look at the positive side. You are among the lucky ones who have reached this stage.
So let us go with the positive. Let us never have any fears. So at this point of time, go with the bindas attitude. What should be the attitude? I am going for a drawing room discussion. I'm going to meet sir who has taught me, and I'm going to have a long discussion with him. So it is nothing. So please remember, if you have interviews like a drawing room discussion in a very, very relaxed atmosphere, be assured that half of your work is done. For this purpose, compose yourself outside. When you आपका जब अगला पहला गया हुआ है, आपको पता है अगला नंबर है. Take deep breaths. Let lot of oxygen go into your brain, so that then you are aware कि क्या हो रहा है. And at that moment, just shut your mind off. क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा. अब जो होना है वो तो होने ही वाला है ना. Don't bother. Just go. Okay, I'm going there to enjoy. I don't know whether I'll be selected or not, but चलो आज मेरा experience. Just go with this attitude. Do not at that moment fear मेरा क्या होगा. जिसका नहीं भी हुआ वो हो सकता है बाद में बहुत बड़े एडवोकेट्स भी बने हो. So nothing, कुछ ये कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल के बाद आएगा. So first thing is be composed and just do not bother. जो होगा देखा जाएगा. Have this attitude. That's the first thing which you, this is a very difficult, it is easier said than done. But once you master this, do it. You know, एक दरवाजा खोलो अपने घर में, सोचो ये इंटरव्यू मेरा रूम है. ओके, क्या होगा? कुछ नहीं होगा. हरियाणा आ रहा है, पंजाब आ रहा है, हिमाचल आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, यूपी आ रहा है, कहीं भी निकल जाऊंगा. अगर मैं यहाँ रिटर्न्स में निकल सकता हूँ, कहीं भी निकल जाऊंगा. Nothing is the end of the world. So पहला point, mind game है ये. So first thing, don't be scared. You have nothing to lose. सब कुछ पॉजिटिव हुआ है, आगे भी पॉजिटिव होगा. Next point. Now you know somebody will usher you in. कोई आपको लिए दरवाजा खोलेगा और आप अंदर जाओगे. Now because somebody is opening the door. Now what happens? Moment you enter the door, you are going to face. You will have to walk about 5 to 10 steps depending on various public service commissions. Normally about it is 7 to 10 steps मैं देखता हूँ. Now, for girls, please do not wear. Sometimes, mostly, you know, कईयों के इनके wooden floors होते हैं. I don't want you to wear those sandals जो टक 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 करके चल रही हैं. आप अपनी आवाज से खुद ही डर जाते हो. So I don't want you to wear. Please see कि आपके soles के नीचे क्या कहीं कोई wood है. नहीं है तो by chance तो एक टेप लगा लेना ताकि टक टक ना करे. That's, you know, these are all practical things जो होती हैं. So then, when he opens the door, suddenly you see in a semicircle 9 people. 9 लोगों में 5 honorable judges होते हैं. एक normally it is chief secretary. One there is a representative of the public service commission. और एक normally एक psychologist expert होता है या कोई legal expert होता है. Now when you see them, you know एकदम से टिपिटी गुम हो जाती है. ओ सारे आ गए. नहीं. Just be, they are just, tomorrow you are going to sit on those chairs. It's just कि वो पहले पैदा हो गए हैं. बस ये attitude लेके चलना है. कि you are not entering something कि ओहो अब तो जैसे बकरा कटने को जा रहा है. No, you are just going for a drawing room discussion. You have a lot of knowledge. Let us have discussions. I'm going to enjoy the discussions. So that is the first thing which you must remember. So now, as I said, you have to market yourself. Your marketing starts right there. Now, the first aspect of marketing is good manners. So, जैसे वो दरवाजा खोले, enter करा, smile. Please smile. Always remember, a pleasant person is always acceptable everywhere, and a grumpy person is rejected everywhere. So, I want you to have a bright smile. Look at everybody with a smile and wish. वहां से अभी क्योंकि थोड़ा दूर हो, सबसे पहले अब आप एंटर कर रहे हो, टेक देयर परमिशन. प्लीज मे आई कम इन सर. नाउ दिस इज द फर्स्ट सैल्यूटेशन जो आपका होना चाहिए. सर प्लीज मे आई कम इन. कम इन. आपको सिंक्रोनाइज करना है. स्माइल, 7-8 स्टेप्स. उनकी जो चेयरमैन है, एक बार सबको देख के स्माइल के साथ लुक इनटू द आईज. I want you to look into the eyes of the chairman. And now, looking at everybody, now you give the salutation.
अगर सुबह है गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून है गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, और 4 बजे के बाद गुड इवनिंग। अगर सारे सर्स हैं तो कहना है गुड इवनिंग सर्स, गुड आफ्टरनून सर्स। नो लॉर्डशिप्स, नो नथिंग, जस्ट सर्स। अगर लेडी है तो पहले मैडम को बोलना है, गुड इवनिंग मैम एंड सर्स, गुड आफ्टरनून मैम एंड सर्स। स्माइल। नाउ stand parallel to the chair. Do not sit down. I repeat. Step number 1, please may I come in, sir? Walk 7. While walking, you are smiling, and now you start salutation. Good evening, sirs. Good evening, ma'am and sirs. And now you have walked up to your chair. Stand parallel to the chair. Do not sit down. Now they will say, please take a seat. Now you sit down and say, thank you, sir. Now, when you sit down, how do you sit down? That's important. Sometimes अगर आप ऐसे करके बैठ गए तो लगेगा ये तो बिल्कुल ड्राइंग रूम में बैठ गया। अगर आप बिल्कुल आगे बैठ गए तो लगे गिरने वाला है। So what is the right way? The right way is touch the small of your back. जो नीचे रीढ़ की, हमारी बैकबोन की नीचे की हड्डी होती है बोन के ऊपर, उसको बैक ऑफ द चेयर को टच करो। दैट इज द राइट वे। आई रिपीट, जो आपकी बैकबोन, जो स्मॉल ऑफ द बैक होता है, जिसको हम बिल्कुल टेल बोन के ऊपर जो जगह होती है, उसको टच करो। अब राइट पोस्चर अपने आप बन जाएगा। सो टच द बैक, द स्मॉल ऑफ द बैक टू द बैक ऑफ द चेयर, automatically the right posture comes. Your hands should be clasped. They should be clasped like this in your lap. क्यों? बाई चांस टेंशन हो रही है तो टेंशन निकालने का तरीका होता है हाथों को दबा लो। Suppose you are having some tension, so you can just release that tension by squeezing your hands. पता भी नहीं चलेगा। दो तरीके से आप अपनी टेंशन निकाल सकते हो। फर्स्टली, रिगल योर टोज इन योर शूज। अपने टोज को रिगल करो, वो बेस्ट तरीका होता है। या अपने हाथों को दबाओ, उससे काफी सारी टेंशन निकल जाती है। दैट इज अनदर वे। नाउ इफ यू आर कैरिंग सम सर्टिफिकेट्स विद योरसेल्फ, साइड में आपके टेबल पड़ा होता है, उस टेबल पे रख दो और अब रखो, अब वहां पूछो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट दे मे आस्क यू, समटाइम्स क्या होता है, वो सारा दिन नेचुरली इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी चाय आ जाती है, तो अब वो आपको पूछते हैं, वुड यू केयर फॉर टी? प्लीज फॉर हेवन सेक डोंट से यस, जस्ट से थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आई थैंक यू वेरी मच, आई वुड नॉट प्रेफर। सो जस्ट this. Now also remember, there is a glass of water lying in front of you, and sometimes what happens is glass of water के ऊपर एक कोस्टर पड़ा होता है या कई बार नीचे पड़ा होता है। आप घबराहट में आपने गिलास उठा लिया, साथ ही कोस्टर भी साथ ही आ गया, वो टक करके नीचे गिरता है, आप खुद ही घबरा जाते हो। This all has happened. So first thing, try not to have water. Unnecessarily it shows tension. 10 मिनट पानी के बिना नहीं रह सकते क्या? सो डोंट फॉल इनटू दीस ट्रैप्स। ग्लास नजर आता है, हो बहुत प्यास लग गई, पानी पीना शुरू, साथ ही कोस्टर आ गया, कोस्टर गिर रहा है, पानी गिर रहा है, 100 से आप पे। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हेन sometimes what happens is, if you are too worked up, you give a wrong salutation. गुड मॉर्निंग को गुड आफ्टरनून कह जाओगे, गुड इवनिंग को गुड मॉर्निंग कह जाओगे। सो इफ दिस थिंग हैपेंस, इमीडिएटली करेक्ट योरसेल्फ। हो जाता है, बहुत कॉमन है। गुड इवनिंग सर, आई एम सॉरी सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी स्वीटली शिपिशली ना स्माइल करके, सर आई एम वेरी सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। दे ऑल्सो नो कि आदमी घबराया हुआ आता है। सो बहुत कॉमन है, इमीडिएटली करेक्ट योरसेल्फ। कई बार क्या होता है, आप जब करेक्ट नहीं करते, वो कर देते हैं, गुड मॉर्निंग है, अच्छा मॉर्निंग हो गई है, ऐसा बोल देते हैं, तो फिर आप घबरा जाते हो। सो दिस इज द वे यू हैव टू डू इट। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस थिंग। ओके, नाउ एज आई सेड, यू हैव द वंस यू सिट डाउन, सो ये जो आपका
आना इंटरव्यू रूम में और बैठना, और जब आप उनको एक्सपेक्टेंटली स्माइल के साथ देख रहे हो, ये आपका 20% इंटरव्यू पूरा हो चुका है. दे हैव ऑलरेडी टेकन अ लाइकिंग फॉर यू और गॉड फॉरबिड अ डिसलाइकिंग फॉर यू. ये इसीलिए पहला जो एंट्री है वो बेस्ट होनी चाहिए. आई होप नाउ एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. You must make a great impact right from your entry to this point. उसके लिए जरूरी है 3-4 बार घर में आप ये प्रैक्टिस कर लो और उसको ज्यादा दिमाग में मत रखो. जैसा कि मैंने बोला, गो विद दिस थिंग कि मैं एक ड्राइंग रूम डिस्कशन के लिए जा रहा हूं. दैट इज ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड. नाउ once you have sat down, just keep a smile looking at, and please never look down, never look up. Many times students keep looking at the ceiling. तो फिर वो कई बार एक दो बार हुआ तो उन्होंने बोला आजकल सीलिंग में बहुत कुछ लिखा होता है ना, तो फिर आप बड़े घबरा जाते हो. दिस थिंग हैज हैपेंड. सो आई डोंट वांट यू टू लुक एट द सीलिंग. लुक हियर एंड देयर, लुक डाउन, लुक इनटू द आई, लुक इनटू द आई. क्या हो जाएगा वर्स्ट? वर्स्ट क्या हो जाएगा? नहीं पास होगे ना. तो ये कौन सा मैंने बोला कुंभ का मेला है, आ रहा है ना, और 10 और के एग्जाम्स आ रहे हैं. सो व्हाई आर यू स्केर्ड? नो नीड टू बी स्केर्ड. तो इसीलिए गो विद दिस कॉन्फिडेंस कि आई एम द बेस्ट. तो फर्स्ट थिंग, आई एम द बेस्ट. मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैं बेस्ट हूं. मेरे से ऊपर कोई ज्ञाता नहीं है लॉ का, मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता, मैं आ गया हूं. सो दैट इज द कॉन्फिडेंस आई वॉन्ट यू टू हैव. चाहे पढ़े हो या नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है. और एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में तो मैं बहुत श्योर हूं कि उनको तो कोई हरा नहीं सकता. सो दैट इज वाई गो विद योर हेड हेल्ड हाई, नॉट टू हाई. मुझे ये भी ना लगे कि ये प्राउड है. आई वॉन्ट अ नॉर्मल पर्सन, एक नेचुरल नॉर्मल पर्सन की मुझे जरूरत है. Now, you know what happens then? Everywhere they start, the first thing is introduce yourself. When I say introduce yourself, one mistake which everybody makes, myself. This is wrong English. 99% लोग कहते हैं, नॉर्मली सारे कॉन्वेंट से नहीं पढ़े. एक चीज और, please remember, this is not a test of English. If you don't know English properly, if you are not very proficient in English, you can sometimes straight away say that, sir, may I answer this in Hindi? तो उसमें कभी भी आज तक मैंने नहीं शुरू देखा. You know, this actually practice I started about 6-7 years back. I had one batch of interview in 2014 जिनमें 5-7 बच्चों ने बिल्कुल इंग्लिश खराब थी, and they were appearing here. So when I was preparing them for interview, I realized कि उनकी इंग्लिश बहुत खराब है. So then I said कि बेटा वहां जाते ही बोल देना, सर मैं गरीब स्कूल से पढ़ी हूँ, I've studied from a government school, मेरे पेरेंट्स अमीर नहीं थे, तो सर can I answer your questions in Punjabi? And you know, this worked in her favor. उसको सिंपैथी मिल गई कि बेटा कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, चलो आप पढ़ के छोटे स्कूल से पढ़ के इतनी जगह ऊपर पहुंच गए, वंडरफुल. वही चीज मैंने उसके बेनिफिट के लिए यूज कर ली. सो यू नो, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी वर्क ऑन अ सिंपैथी दैट आई विल टीच. जब मैं पर्सनली कराऊंगा मॉक इंटरव्यू, वो पर्सन टू पर्सन मैं कराता हूं कि कहां मुझे सिंपैथी फैक्टर यूज करना है. सो लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल अ कंसिडरेशन. ये चीज दिमाग से निकाल दो. All those who are not very proficient in English need not worry at all. Language is not at all any measure for your success. Okay. Now, so when you say introduce yourself, this is the first question. यहीं आप पहली बार मुंह खोलते हो. So, sir, I am so and so. Now, your introduction must be very short and sweet. Normally, what happens is आप पूरा चिट्ठा खोलना शुरू कर देते हो. सर मैं सो एंड सो, मेरे फादर ही हैं, मेरे फादर ये काम करते हैं, इतना टैक्स देते हैं, पूरी राम कहानी शुरू कर देते हो. नो, आई टोल्ड यू, हाथों को आपको ऐसे अपनी लैप में रखना है. ऑल्सो वन थिंग मोर, यू शुड नेवर सिट क्रॉस लेग्ड. सिंपल स्ट्रेट नीचे, टांगे ज्यादा, स्पेशली बॉयज खोल के नहीं बैठना, बहुत बुरा लगता है, बहुत चीप सा लगता है. पास टांगे करके लैप में, हाथ ऐसे करके लैप में रखना है. ओके. नाउ
Sir, I am so and so. I belong to so and so place. And I have done my LLB from this place. बस बस इससे ज्यादा मुझे इंट्रोडक्शन नहीं देनी. Sir, I am so and so. I belong to this place and I've done my law LLB from this place. अगर आपने LLM किया हुआ है, and sir, after doing my LLB in this year, I have done my LLM in this year. बस. Now, कई बार क्वेश्चन होता है आपने LLB पहले किया होता है और उसके बाद 3-4 साल हो गए. ऐसे केसेस में दे ऑलवेज आस्क व्हाट वर यू डूइंग फॉर दीस 3-4 years. सर, अगर आप कभी कोर्ट जा रहे थे तो गुड इनफ, अगर नहीं जा रहे थे. सर, माय ड्रीम इज टू बिकम अ जज एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. सर, कोविड आ गया. लकीली कोविड आ गया हमारे पास 2 साल का. सर, 2 साल कोविड आ गया था, इसलिए आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. Now, please remember, you will not speak more than this. The more you speak, the more you will fall into a trap. That is maximum. इससे ज्यादा आपको नहीं बोलना. See, when I say I belong to this place, अगर वो प्लेस कहीं हिस्टोरिकल प्लेस है तो उस प्लेस का पूरा आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कोई पंजाब में एक बार कोई मलेरकोटला से था, पूरी हिस्ट्री उन्होंने मलेरकोटला की पूछ ली. अब आप मध्य प्रदेश जा रहे हैं, या वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बिहार. नाउ प्लीज रिमेंबर, स्टडी, यू डोंट बिलोंग टू मध्य प्रदेश. पहला क्वेश्चन आपको आएगा, आप रहने वाले हो चंडीगढ़ के, आप मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हो. नाउ अगर ऐसा क्वेश्चन आए, you have to reply, sir, I always wanted to be a judge. For me, India is one. Madhya Pradesh is also a Hindi speaking area. I feel very much at home here and I would love to serve in a new place like Madhya Pradesh. It gives me new challenges. So don't say, नहीं सर मैं पंजाब भी दे रहा हूं, वहां निकल जाऊंगा, फिर यहां छोड़ दूंगा. वो कहेंगे अभी निकलो. So please remember, how do you answer this? मैं रिपीट कर रहा हूं. What, you are a person from Punjab, Haryana, UP. What are you doing in Madhya Pradesh? Sir, it is judiciary which I love. Ever since I joined LLB, my dream was to become a judge. And now I'm seeing my dream being realized. और यहाँ पे, जहां भी वो आया मौका, I'll tell you one एक मैंने चालाकी सिखाई थी अपने स्टूडेंट्स को, वो यूज की और वो जज भी बन गए. उन्होंने एक जगह, एक जज साहब ने कहा, सपोज वी मेक यू जज. उसी वक्त हाथ जोड़े कहता, सर विद गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स. वो इतने उसके आंखों में आंसू आ गए जज के, कहता नहीं बेटा बनोगे, जरूर बनोगे. वो बन गया. सो लर्न टू हैव दीज क्विक विटी रिमार्क्स. सो एक चीज जो आपको याद रखना है, विद गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स, ये एक चीज जहां भी घुसा सको प्लीज घुसा देना. these are every human being wants that kind of respect and love. So these are the things which you can always use at the right time. So when I say, first thing is I am so and so, no need to tell you about your parents. Why? You can tell about your parents if they belong to the legal fraternity. If they don't belong to the legal fraternity, remain quiet. Because tomorrow if you say, sir, my father is a businessman, then they will say, कौन सा business चलाते हैं, फिर 100 लफड़े business के पूछेंगे. Remain quiet. Unless asked, remain quiet. Now, students who are going from a rural background, those who are coming from a rural background, I would like to use this for your advantage. How am I going to use it for your advantage? I will introduce myself, sir. I am AK. Sir, I belong to a very modest place, a small village in this district. And sir, I have studied with great difficulty because my parents are not very rich. But sir, it was my dream. In fact, I am one of the only advocates from my district, from my village. And with God's grace and your blessings, I may be the first judge from my village. These things, how you put them, always remember, sympathy always works. Sympathy always works. But then it should not be a blatant sympathy.
कि मैं ये तैयार करके बैठा हूं, ये मारा मैंने. नो, इट शुड कम इन अ फ्लो. ऑलवेज रिमेंबर, वो जज बैठे हैं, वो बहुत दे आर वेरी, दे आर सुपर इंटेलिजेंट पीपल. डोंट थिंक कि वो आई कैन फूल एनीबडी. Moment you say this, if it comes in a flow, then it is very acceptable. If it doesn't come in a flow, then of course it can be jarring to the minds. So be very, very careful how you speak these words. Like if you belong to a rural place, so fine, just say, sir, I belong to a small time village in so and so place, and sir, with God's grace, I've been able to complete my LLB. अब अगर वो कुछ कहते हैं तो इमीडिएटली बोल दो, सर, विद गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स आई मे बी द जज. क्योंकि कई बार वही कह देते हैं, चलो अब तुम जज भी बन जाओगे, तो फिर एकदम डोंट, इसमें चूकना मत. अगर उन्होंने कह दिया, सपोज यू आर अ जज, उसी वक्त हाथ जोड़ दो, कहो, सर, विद गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स, इफ दिस हैपेंस देन कंटिन्यू. दिस इज हाउ स्मार्ट. आई गिव यू एन एग्जांपल. अब बाद में मैं अपनी बात बाद में बताऊंगा. नाउ the next is your place. So please remember, I am so and so, I belong to so and so place, I've done my LLB in so and so year, or my LLM in so and so year. उसके बाद आपका थर्ड चीज आती है प्लेस के बारे में. नाउ प्लेस के बारे में, if they ask you about Madhya Pradesh, I want all my students who are not from Madhya Pradesh to sit down with the map, Google map today, and see कितने districts हैं, कितने कोर्ट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट्स हैं, और कितने वहां पे इंदौर में क्या है, सब जगह क्या क्या है, ऑल द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, कितनी पॉपुलेशन है, कितने टोटल कोर्ट्स हैं. मुझे सारा डिटेल्स आज शाम तक मुझे सारे तैयार होने चाहिए. सो आई वांट यू टू नो द लेंथ, ब्रेथ, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश. यहां तक कि कौन सा पत्ता वहां पे मैक्सिमम यूज होता है, बीड़ी का पत्ता, तेंदुआ पत्ता, मध्य प्रदेश. टीक सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है. ऑल दीज क्वेश्चन शुड बी ऑन योर टिप्स. कि आप क्या सोचते हो कि मैं मध्य प्रदेश का नहीं हूं, तो मुझे मध्य प्रदेश के बच्चों से ज्यादा पता है मध्य प्रदेश के बारे में. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट. कई बार क्या होता है, आपकी यूनिवर्सिटी बहुत फेमस होती है, तो कई बार यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बार पंजाबी गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई स्टूडेंट था. इमीडिएटली क्वेश्चन पूछा, कोई लैंडमार्क जजमेंट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का? एंड देयर वाज अ जजमेंट, वो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में कराता ही हूं. तो इमीडिएटली पुट टू एंड टू टुगेदर, यस सर, एज फार एज माय लिमिटेड नॉलेज गोज. उनके सामने एक चीज याद रखना, जो मैं हमेशा कहता हूं सारे मेरे स्टूडेंट्स को, बोर्ड के सामने पप्पू बन के रहना है. डोंट बी ओवर स्मार्ट. यू मे नो लॉ, यू मे बी द बेस्ट इन लॉ, बट प्लीज रिमेंबर, बोर्ड के सामने पप्पू बन के रहना है. आई होप इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज पप्पू बन के रहना है. यू हैव टू कीप अ वेरी लो प्रोफाइल. You don't have to be flaunting your knowledge, or your body language should not be offensive. It should be a very, very, I will not say a subdued also. It should be not be subdued. It should not be defensive. It should not be offensive. It should be a natural body language. Okay. The next question which always comes is, what is your favorite subject? 90% cases all over India, I've noticed that the first, after the original introduction, the next question which comes is, what is your favorite subject? Now, this is a very, very, very dangerous question, and every interview they ask this question. When you say it is your favorite, now firstly your answer should be, sir, I enjoy law. I love law. Whether you like it or not, that is a separate issue. Sir, I love law, but if I'm asked which is my favorite subject, now don't say criminal law. Criminal law is not a law. It's a complete genre. So whenever, and if you say criminal law, तो ठीक है, फिर आ जाओ. फिर मैं एनडीपीएस पे भी पूछता हूँ, आर्म्स एक्ट पे भी पूछता हूँ, सीआरपीसी पे भी पूछता हूँ, आईपीसी भी पूछता हूँ, एविडेंस पे पूछता हूँ. आपने सारा रास्ता खोल दिया मैंने. So that is the reason why
I now have to be very specific. Sir, I enjoy the entire law, but if I'm asked specifically, sir, I my Indian Evidence Act is my favorite. Sir, all laws are my favorite, but if I'm specifically asked, sir, I will venture to say Indian Evidence Act. So I hope I'm clear on how will you answer this question. Oh, your name is Papu. Okay. Well, it is not meant to be offensive. I just meant to say that you should keep a very low profile. Okay, fine. Now, one thing you always must remember, if you have done your LLM, then the question which is going to be asked from you is the topic of your dissertation. Most of the students who are going to for their interview, say about 70-80% have done LLMs. Some are even pursuing PhD. If you have done your LLM, please revise the topic of your dissertation in LLM. And if you are doing your PhD, if you have not written in your form that you are doing PhD, remain quiet. Because then a lot of questions arise. If you're doing your PhD, why do you want to become a judge? Why don't you become a professor? अगर नहीं बताया है तो बताने की जरूरत नहीं है. Just restrict yourself to LLM. Okay. Now, one thing you must remember, all questions flow out of questions. जितने आपके क्वेश्चंस हैं वो आपका क्वेश्चन जहां छोड़ोगे वहां से अगला क्वेश्चन निकलेगा. Now, no questions, Prachi. Please control yourself. Listen to me. This is the lecture in which you should be listening. We have very less time. Now, all questions flow out of questions. Remember this. So, जहां आप अपना पुराना क्वेश्चन का आंसर का जवाब छोड़ोगे वहां से अगला क्वेश्चन अराइज होगा. So be very careful in where you leave your answer. Every question will flow out of your previous answer. This is one thing which you must always remember. Next point. In case you forget, doesn't matter. Do you which rule or which order? Suppose ऐसा पूछते तो नहीं है, but suppose एक example दे रहा हूँ. Then say, sir, think for a second and say, sir, I'm very sorry, I'm not able to recollect. Don't say, I don't know. Sir, I'm not able to recollect. So the term which you should be using is, sir, I'm sorry, I'm not able to recollect. I'll give you an example, my personal example of UPSC. I was the topper of my UPSC interview. During the middle, I had the interview about 57 minutes, almost 1 hour. I was asked in 3-4 questions were asked, and I remember one was in Ukraine at that time. I had no idea from Timbuktu what the answer was. Question number 1, sir, I'm sorry, I don't know. Question number 2, second member, sir, I'm sorry, I don't know. Question number 3, I don't know. मुझे लगा चलो बोरिया बिस्तर बांधो, चलो अगले साल आएंगे. That is the time when I had a lot of certificates for declamations वगैरह, ड्रामा, काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी. रात को जब मैं अपने सर्टिफिकेट्स तैयार कर रहा था तो मुझे एक चीज याद आई कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज कहते हैं. तो व्हाई नॉट प्रिपेयर ऑन म्यूरल्स. तो मैं सारे म्यूरल्स तैयार कर गया कि इतने सारे सर्टिफिकेट लेके जा रहा हूं, वो कहेंगे एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज है, चलो म्यूरल्स पे पूछेंगे. तो व्हेन आई कुड नॉट आंसर, आई स्टार्टेड कलेक्टिंग माय सर्टिफिकेट्स कि चलो अब तो रास्ता बाहर का है. एंड इमीडिएटली दे सेड, व्हाट आर दीज? आई सेड, नाउ आई मेड देम कम इनटू माय ट्रैप. I said, sir, these are my extramural activities certificates. Oh, what are murals? There, they fell into my trap. उसके बाद हर क्वेश्चन वो आ रहा था जो मैं चाह रहा था वो मेरे से पूछेंगे. सर, द म्यूरल्स इन मध्य प्रदेश, उसके अंदर ये केव्स हैं. उसका आंसर मुझे आगे पता था. सो देन द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स मैं जो चाह रहा था वो क्वेश्चन जान के वहां छोड़ रहा था, अगला क्वेश्चन वही आ रहा था. Same thing you have to do. Please leave that question at that place. Specifically use that thing जो आप अगला क्वेश्चन पूछना चाहते हो.
आप एविडेंस का चल रहा है, आपने कोई ऐसी चीज लेके कोई रेलेवेंसी पे बात छोड़ दी, एडमिसिबिलिटी पे छोड़ दी, अगला क्वेश्चन एडमिसिबिलिटी पे, एडमिसिबिलिटी पे आ रहा है, मैंने कोई लीगल रेलेवेंसी का पॉइंट छोड़ दिया. So you know, how you run your interview, that is the smartness. And I told you मैं फिर टॉप किया. So इसका एक चीज, एक मेरी अपनी इंटरव्यू यूपीएससी के एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन निकलता है. Even if you are not able to answer 3-4 questions, does not matter. Does not matter. It is a test of your personality. अगर आपके 2 क्वेश्चन हो गए, आपको नहीं जवाब आया, आपने कहा ओ अब तो गया है, डिवाइन एविडेंस है, ओ सर एविडेंस क्या होता है, वो घबरा गए. घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा. वर्स्ट टू वर्स्ट अगर नहीं याद आ रहा, सर आई एम वेरी सॉरी, आई एम मैंने तो एक बार जब उन्होंने मेरे को बोला ना 3 क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे थे, कहते क्या हुआ, मैं कहा सर एनीबडी वुड गेट एब्सोल्युटली कंफ्यूज बिफोर सच एन ऑगस्ट गैदरिंग. इतने बड़े लोगों के बीच में बैठा हूं, मैं तो सर एक छोटा सा स्टूडेंट हूं, तो कोई भी आदमी सर ऐसा हो जाता है. यू नो कुछ भी, आई एम टेलिंग यू, कैसे आप हैंडल कर लो उस चीज को, फायर फाइटिंग करना आना चाहिए. यू मस्ट नो हाउ टू डू द फायर फाइटिंग. आई होप एवरीबडी इज नाउ क्लियर कि मुझे जाना कैसे है, मुझे चलना कैसे. ओके, सो वन थिंग यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, your questions will flow out of your last answer. So your answer should not be haphazard. So also remember, please, we should not be in a hurry to answer. I've asked you a question, मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं, आपने जवाब देना शुरू, और यहां गलती पक्का करोगे. Let me finish my question. Look at the person as if you are thinking, and then start answering slow. You know, those who speak slow can control many mistakes. Don't be in a hurry. Don't blurt out your answers. ये अब मुझे आंसर आता है, सर द आंसर ऑफ लीगल रेलेवेंसी इज दिस. गलती मार दी कोई. नो, आता है या नहीं आता, एक स्लो स्पीड रखनी है. सर दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस. और छोड़, जब आप स्लो बोलते हो, आप अपने वर्ड्स पे ध्यान रखते हो, और फिर कहां मुझे छोड़ना है, मैं स्मार्ट हूं, मुझे पता है अगला क्वेश्चन यहां से आना है, मैं यहां छोड़ दूंगा. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज वांट यू टू स्पीक स्लो. हैव यू नोटिस, वो आदत मुझे इतनी पड़ चुकी है कि इवन जब मैं लेक्चर्स देता हूं तो मैं स्लो ही बोलता हूं. वो आदत मुझे मेरे यूपीएससी के टाइम से पड़ी हुई है. आई स्पीक वेरी स्लो. द रीजन बीइंग, आई एम ऑलवेज, जो कहते हैं ना तोल मोल के बोल, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. You have to weigh your words before you speak. Now, you know, there are many questions which basically are very dangerous questions. I will just give you few examples of the questions which were asked. There was an ADJ interview going on, and he was asked, you were entering the room and someone stabbed you. What offense has been committed? He said, sir, murder. He said, okay, bye-bye, jaiye. Reason being, सोचे बिना उसने जवाब दे दिया. द रीजन क्या है, अब कोई बोल रहा है कि आपको स्टैब किया है, ये काम मैंने बोला है कि आप मर गए. सो फर्स्ट यू हैव टू आस्क, सर डिड आई डाई, सर व्हाई डिड दैट पर्सन स्टैब मी. नाउ दैट मींस, जब मैंने आपको बोला कि यू आर एंटरिंग दिस रूम एंड समबडी स्टैब्ड यू, आई हैव आस्क्ड यू द एंटायर जनरल एक्सेप्शंस, एंटायर कांसेप्ट ऑफ मेंस रिया, एंटायर कांसेप्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. मैंने सारा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसीलिए जल्दी में जवाब नहीं देना. एक इस बार दिल्ली इंटरव्यू में मेरा एक स्टूडेंट था, इस बार का ऑनलाइन बैच का, वो निकला था, उससे क्वेश्चन पूछा गया, एक बीकर में पानी पड़ा है, विटनेसेस कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द विटनेसेस कह रहे हैं स्वीट है, और काफी सारे विटनेस कह रहे हैं सार है, सॉल्टी है. आप कैसे डिसाइड करोगे? एंड इमीडिएटली ही इज नाउ अ जज इन दिल्ली. ही सेड, सर पानी है ना, मीठा और सॉल्टी है ना, मैं पी के देख लूंगा. नाउ यू नो, दिस वाज अ ब्रिलियंट आंसर एंड ही वाज सिलेक्टेड. दीज आर जस्ट 2 एग्जांपल्स जो मैंने बताए हैं. नाउ एक चीज याद रखनी है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड ऑन जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज आपके हो सकता है आपका करिकुलम में ना हो, जैसे पंजाब हरियाणा में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट इंटरव्यू में जो आपकी चीफ सेक्रेटरी हैं
या जो पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर है, वो आपको जनरल नॉलेज पूछेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द पेट क्वेश्चन विच इज डेफिनेटली गोइंग टू अकर इज यूक्रेन, पक्का. So now the question will be, do you think that Russia is justified in invading Ukraine? Now please remember, a judge never is partisan. Judge कभी भी पार्टी नहीं होता कहीं भी. So always remember, how will I answer this question? Sir, all wars are abhorrible. सारी wars खराब होती है. Wherever innocent people die, that cannot be justified. So no wars can be justified. Now, but at the same time, there is a viewpoint of the Russian viewpoint is that Ukraine was trying to curry favor with the NATO. He was trying to bring NATO right to the doorstep of Russia, which was definitely like a red rag to a bull. And that is probably the price he is paying. So probably it's a failure of statesmanship, and that he could not foresee the result of this act of his. At the same time, sir, no doubt Russia has declared war, has invaded. The loss of lives is always abhorrible. It can never be justified. Any life which is taken, especially of innocent people, is always never justifiable. So, give a balanced answer. I don't want you to say, नहीं सर, रशिया बहुत ही खराब है, क्या समझ, पुतिन की आंखें देख लो सर, कैसा खतरनाक सा लगता है. No, I just want you to give a very balanced answer. सर, यूक्रेन की ये गलती थी, इसलिए शुरुआत हुई, और अब इसकी ये गलती है. And war as a general is bad. One question which is always asked, why do you want to become a judge? इसका जवाब बहुत सारे लोग बड़े लुडिक्रस तरीके से देते हैं. सर, मैंने उसको देखा था, मैंने उसको देखा था, वगैरह वगैरह, मैं लाल बत्ती देखता था. No, please, these are childish answers. You should be giving a very mature answer. You must say, sir, I had joined LLB with the sole objective of becoming a judge. Right from the beginning, my aim was to become a judge. When I was a student in school and I used to read the Constitution, I used to feel very proud of the judiciary. And it was at that time that I decided that, sir, I'm going to become a judge. And with this in my mind, I joined LLB. And sir, and now on that track, I want to fulfill my dreams. बहुत बार क्वेश्चन उनका जवाब आता है, what if you are not able to make it this time? Sir, in that case, something must be deficient in me. I will work double hard and come before you again next year. This is the confidence. So बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, अगर इस बार सेलेक्ट ना हुए तो क्या होगा? Sir, I will make up my deficiencies, work double hard, and then return before you next year and seek your blessings. ये आंसर इस तरह देने हैं. So when you say, why do you want to become a judge? It has always been my dream. Now, what attracts you to become a judge? Why? What attracted you? Sir, it is the aura of judiciary. The aura of being a judge is very big. It is the independence of judiciary as compared to bureaucracy, which is comparatively not as free. A judge is independent. He can give any decision irrespective of and regardless of any interference. There is no interference in judiciary. And that is why I always feel very proud of Indian judiciary. And that is what goads me. The aura, the independence of judiciary attracts me to judiciary. Don't use words like power. There is nothing called power. एक बार एक कैंडिडेट ने कहा था, सर मुझे क्लीशेड आंसर्स, सर आई वांट टू सर्व द सोसाइटी. एकदम जवाब आया, एडवोकेट सर्व नहीं करते, वो गरीब लोगों की फ्री लड़ लो, जाके जाओ सर्व करो सोसाइटी को. फंस गया वो. सो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब बहुत ध्यान से देना है. डोंट यूज दोस क्लीशेड आंसर. सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, करो ना, जाके जाओ कारगिल में आगे जाओ लड़ने पहुंच जाओ. सो ऑलवेज से, सर, it is the aura of judiciary, the independence of judiciary, and that is what it attracts me to judicial posts. Okay,
बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत डेंजरस क्वेश्चंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जो पूछते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ इट, डू यू थिंक यू आर फिट टू बी अ जज. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, डू यू थिंक यू आर फिट टू बी अ जज. द आंसर इज, सर, with all humility, I do feel that I am fit to be a judge. The reason being, sir, right from the beginning, I was honest in my thought process. I'm a hard-working person. I always go for reason. I try to be balanced in my life. These are the qualities of a good judge. So please remember independent thought, balanced views, reasonability, and most importantly, hard work. I work hard. So I work hard. I'm a reasonable person. I'm a balanced person. I'm independent minded person. And most importantly, I'm honest. Not only कि मैं bribe नहीं लूंगा, मैं अपने thought process में भी honest हूँ. These are the hallmarks of a good judge. दो तीन साल पहले एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन पूछ लिया एक जज साहब ने, इज जुडिशरी करप्ट. फॉर्चुनेटली मैंने इंटरव्यू में तैयारी कराई हुई थी. एज ए सेड, ऐसे क्वेश्चंस ब्लैक एंड व्हाइट कभी नहीं होते. ऑलवेज अ ग्रे आंसर हैज टू बी गिवन. इफ आई से नो सर, जुडिशरी इज नॉट करप्ट, इमीडिएटली दे विल कोट यू द एग्जांपल्स जहां पे जिनका रिमूवल प्रोसेस शुरू हो गया था. चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट और भी थे हमारा, और एवरीवेयर दिस थिंग, बहुत सारे आते हैं. तो इंस्टेड फिर आप फंस जाते हो कि हाँ वो तो थे सर. सो यू हैव टू से, सर, ऑफ द 3 pillars of our constitution, the most honest is judiciary. Of course, sir, bad apples are everywhere, no doubt about that. But by and large, judiciary is not only honest, it is still perceived to be honest. The common rickshaw man, if you go to the common person, he always says, I will see you in the court. So that is why even the common man on the street still has a lot of respect and lot of confidence on judiciary. And that is another aspect which goads me to go to aim for judiciary. So please remember, never ever go black or white. Always take the middle path. एक क्वेश्चन पूछा गया था, डू यू थिंक दैट, क्योंकि हिंदूज की मेजोरिटी है, 85-87%, 87% of India is Hindus. Do you think that India should be declared a Hindu Rashtra? Immediately say, sir, with due apologies, I say no. The reason being that the main ruling, we are ruled by our constitution. And our constitution does not permit, the main aspect is right to equality. And when we say right to equality, secularism and right to equality is the very foundation stone of India. The very foundation stone of India is based on the basic cherished principles laid down by our constitution. So there is no question of even thinking like a Hindu Rashtra. If we think that we should have a Hindu Rashtra, the very thought process will put the minorities in fear. So that all the minorities who chose to remain in India, they are our fellow brothers, they are Indians first. So we must never do any such act which brings the minorities in fear. So that aspect has to be kept in mind. Always remember, whenever you answer any question, you can never go beyond the Supreme Court or beyond the Constitution. आपका आंसर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं उनसे बाहर नहीं जाओगे. Even if you are not agreeing with the Honorable Supreme Court's decisions, you will not go beyond, because after all, we are governed by our Honorable Supreme Court's decisions. टाइम हो गया, अभी बहुत सारा कुछ बोलना था मैंने. चलिए देखते हैं if I can take another general lecture on how to face interview. Yes, Vivek, if you have done your job, definitely उसकी तैयारी, उसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा. Yes. Okay, I'll just take some questions. The most independent common usages in the code. Yes, correct, Saksham. वो मैंने बोला है, मोहित, just go through that.
clear as well. Yes, yes. Yogita, if you miss the question, there is no harm in asking, sir, I'm very sorry. You know how you ask. That is important. No, no stubble. कौन बोल रहा है? Shekhar. No, clean shaved. Stubble gives a very dirty appearance. Yes, yes. Thank you, Ishan. Thank you. God bless you. Doesn't matter, रिया. अपने आप को इतना अपने आप को हाई लेवल पे दिखाओ, वहां पे अच्छा दिखाओ, जरूरत ही ना पड़े. I told you, you have to market yourself. You have to market yourself. Yeah, I will take another session, I guess. After selection, जो मर्जी करो विशाल. Yeah, no jeans. कौन बोल रहा है? Shearing, no. No jeans. No. Please wear. You have to wear an Indian dress. Don't wear jeans. Don't make that mistake. The dress code has to be nothing but what I've told you. Be very careful about that, please. No shirt pant. Girls, no. It always, please remember, जो हमारे judges हैं, they are all 60 plus. So there is always a generation gap. वो generation gap को गलत तरीके से रब मत करना. Yeah, Ankita, you can take all those. हाँ, अपूर्वा, आपकी इंटरव्यू 8 मार्च को है. गुड. I don't know whether you are coming in that mock interview. Thursday को है मेरा. You can contact the Unacademy and bring yourself in that. Shaved, Ishan. No slight beard. No socks for Pragya. No socks. सैंडल के साथ सॉक्स नहीं पहननी है अनलेस की बहुत ठंड हो. No, निश्चय. Spectacles can be anyway. Don't worry. Thank you, Pulkit. Okay. Avoid a weak points. Yes. No interviewer presumes. गौरी कोई presume नहीं करता. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसा सुचवाओ. ये आप पे डिपेंड करता है. प्रैक्टिसिंग लॉयर देन ऋषभ, जो आपने लास्ट केसेस लड़े हैं उनके बारे में पढ़ के जाओ. हाँ, यस. डिफेंस पर्सनल ऑलवेज हैव एन एज. तो उसके अंदर यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर मैनर्स, रॉबिन. एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चंस ऑन डिफेंस जो लॉ से रिलेटेड है, खासकर आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, उनको करके जाना है. यस राहुल, मैंने बोला गो थ्रू द इंटरव्यू, मैंने अभी बताया. या सत्यम अगर नहीं बोला है देख लो, अगर नहीं तो एलएलएम में जो डिसर्टेशन है उस पर तैयारी कर जाओ. अच्छा है. ओके, फाइन. आई थिंक I hope everybody is now clear on this. Thank you all. I'll try to take another lecture. Let's see. मैं अगला Saturday, coming Saturday, मैं एक इंटरव्यू पे और ले लेता हूँ. I'll take a second part 2. Yeah, Gaurav. No, there is no Gaurav. There is no question. Gaurav, no. गौरव, आपका क्वेश्चन शो नहीं कर रहा. नहीं गौरव, आई कांट सी योर क्वेश्चन प्लीज. ओके, थैंक यू ऑल. आई हैव नो आइडिया. अवॉइड गौरव लाइट कलर सूट्स, ऑलवेज अवॉइड. बहुत प्रॉब्लम आती है. एक आदत पड़ जाती है, हम वकीलों को काला रंग देखने की आदत पड़ जाती है. ये सब आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूं मैं. हाँ गौरव, तो क्या हो गया? यू जस्ट वेयर अ नेवी ब्लू सूट, ब्लू ब्लैक सूट, ऐसा कर लो. नहीं जसप्रीत, प्लाजोज नहीं. आई डोंट वांट यू टू err on the wrong side. Always remember, जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, इट्स अ वेरी somber occasion. प्लाजोज वगैरह गिव अ वेरी नॉन सीरियस एटीट्यूड. ये होना चाहिए. रोहेला, not an issue, Rohela, but I'll prefer that. I know you should wear a pastel colored suit. Better रहता है. Pooja, depends on your complexion.
इफ यू आर वेरी फेयर, जो देख लो जो कलर आपको सूट करता है, इवन अ फोन कलर, लाइट ब्राउन कलर, जैसे क्रीम कलर्स अच्छे लगते हैं, डिपेंड्स. रुपिंदर, जीन्स विद लॉन्ग कुर्ता, गुडनेस. नहीं, सिख हूं कोई हूं आकाश, ड्रेस कोड इज द सेम. हाँ, अगर लड़के हैं तो यू हैव मस्ट वेयर अ बियर्ड. इफ यू आर हैविंग अ beard, then you must wear a turban. You can't wear a turban without a beard. फिर बहुत बुरा लगता है. Unacademy. Let's crack it.